हेलो एवरीवन, आई अभिषेक वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑप्शंस डेस्क। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द ऑप्शन डेस्क पे स्वागत करता हूं। सो इन दिस वीडियो वी विल लुक इनटू रीडिफाइनिंग द बॉस स्कैल्पर, हाउ टू मेक इट मोर एक्यूरेट एंड ऑल्सो द निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द डे ऑफ वेडनेसडे। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने बॉस स्कैल्पर को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं, कैसे हम फॉल सिग्नल से बच सकते हैं, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज़ मेक श्योर यू join our Telegram channel and also like, share and subscribe this YouTube channel. So now let's start for the Nifty. So as you can see, जैसा कि आप देख रहे हैं, this is the Nifty 50 future chart and this is the 1 hour time frame. Okay, so everyone who wants to apply the boss scalper, it will be given on my Telegram channel. Open, go into the Telegram channel, view in Telegram, and then go into the file sections, and you will get my Telegram channel, from where you will get the boss scalper code. So this is the code of the boss scalper. So I will again tell you how to apply it for those who all don't know. Okay, first just copy the code and go into the Pine editor. Okay, first click on open indicator. Okay, once you click on open indicator, this type of script will pre-written script will come. जब आप यहाँ पे open indicator पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे pre-written ऑलरेडी आ जाएगी, सबको डिलीट कर दीजिए और जो बॉस स्कैल्पर कोड आपने मेरी टेलीग्राम चैनल में जो फाइल दी हुई है उससे कॉपी किया था उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। वंस यू हैव पेस्टेड इट, एक बार आपने यहाँ पेस्ट कर लिया, जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू चार्ट और यहाँ पे बॉस स्कैल्पर हमारा ये ऐड हो गया। अब हमें इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ द बॉस स्कैल्पर इज एडेड टू आवर ट्रेडिंग व्यू सिस्टम एंड नाउ वी हैव टू चेंज सम सेटिंग्स। फर्स्टली गो इनटू दिस एंड this all will be ticked up. Okay, you have to just untick long stop start, and these three only will remain ticked in a boss scalper. Okay, so this is all it, and now you click on save as default. Once you clicked it, this is the boss scalper, how it's going to be applied on our trading view system or whatever the chart you are trading. So now what we have to do, as you can know, the main setting is for Heikin-Ashi, and this is what the Heikin-Ashi system looks like on the boss scalper. So as you can see, the last day, that is the 2nd of May. So अब boss scalper हमारा अप्लाई हो चुका है ऑन द 5 minutes टाइम फ्रेम। Heikin-Ashi चार्ट है और हमारी जो सेटिंग्स है वो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं और चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे भी एक अनटिक रहेगा, यहाँ पे दोनों शो बाय लेबल्स एंड हाईलाइट स्टेट टिक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स है हमारी एंड इट इज़ नाउ अप्लाइड। आप चाहे तो सिल लाइन को रिमूव कर सकते हैं, बट इट इज़ अ लीडिंग MA, सो आई टेक आउट एज अ लीडिंग मूविंग एवरेज, सो आई कीप इट इंटैक्ट। सो नाउ एज यू कैन सी द बॉस स्कैल्पर इज गिविंग सम फॉल्स सिग्नल्स। यहाँ पे तो सिग्नल ट्रिगर नहीं होता बिकॉज द बफर इज नॉट कंप्लीटेड। एज यू ऑल नो कि बॉस स्कैल्पर के लिए 5 से 7 पॉइंट का बफर है निफ्टी एंड 10 to 15 पॉइंट्स का बफर है बैंक निफ्टी में। ओके, दिस इज द बफर। हम निफ्टी में बफर जब छोटा टाइम फ्रेम में जा रहे हैं ऑन 3 minutes, तो हम वी कैन कीप इट एट 4 to 5 points ऑल्सो, बट ऑन द 5 minutes आई एम कीपिंग एट 5 to 7 points or 5 to 10 points. बैंक निफ्टी द बफर इज अराउंड 10 to 15 points. Okay, on the shorter time frame also 7 to 10 points. सो दिस इज द बॉस स्कैल्पर। नाउ वी हैव अप्लाइड इट। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉल सिग्नल से बचना कैसे है। सो यू गो इनटू इंडिकेटर्स, यू गो इनटू सर्च फॉर मनी फ्लो इंडेक्स। ओके, सो दिस इज द मनी फ्लो इंडेक्स। एज यू कैन सी यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स की जो सेटिंग्स हैं आई विल ऑलरेडी शो यू। 10 पीरियड लाइन, थ्रेशोल्ड 88, 12 एंड द लोअर थ्रेशोल्ड। नाउ वी हैव टू चेंज वन सेटिंग्स। अब हमने MFI यहाँ पे देख के मैं अगर आपको और अप्लाई करवा देता हूँ। यू गो इनटू दिस, यू गो इनटू मनी फ्लो इंडेक्स। ओके, so this is it. So money flow index is already applied. Now what you have to do, you have to go into the settings and go into the level 50. Now you have to make this level 50 bold. हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी for identifying the trend and getting a confirmation. Once the level 50 is bold, just click on save as default and the money flow index is applied to you. Now we have a 50 level, that is a mid level that we also use in super scalper. We're just going to refine it with the using of the boss scalper. हम ये mid 50 level जो हमारे super scalper की वीडियो जिन्होंने देखी है तो उसमें भी हम ये mid 50 का level यूज़ करते हैं in super scalping. Now we're just going to redefine it with using the boss scalper and it's most basically combining the super scalper और boss scalper. So ये super scalper में भी हम देखते हैं और हम अब boss scalper super scalper को दोनों को combine करके साथ में यूज़ करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे सेल आया, हमें सेल यहाँ पे लेना था इफ द बफर ब्रेक्स एंड यू कैन सी द लो इज 965 सॉरी, एंड हियर आल्सो 962.65, दैट इज नॉट इवन 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बफर ट्रिगर नहीं होता है, यहाँ पे ट्रिगर होता है द MFI इज ऑलरेडी अप, दिस इज अ बाय सिग्नल एंड वी टेक सिग्नल समवेयर अराउंड हियर एंड वी एग्जिट अर्ली। यहाँ पे सेल सिग्नल ट्रिगर होता है, दैट इज द लो इज समवेयर अराउंड 987 एंड द लो इज समवेयर 982.20. So we take a sell trade here, we buy a put and it goes down deep like this because MFI you can see at this particular point MFI came below 50, 51 somewhere around. At next candle you can take, so I have taken the trade here in this candle because it was below 50.
So this was the MFI, and then on the next day is this. So this is how we will get saved into the fall signals given by the BOSS scalper. अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे हमें कैसे बचना है. So this is the first signal. हम लोग अगली कैंडल का वेट करेंगे कि उसके नीचे बफर दे. हमें यहाँ पे लोअर 349 का और 346 है. तो 3 रुपीज़ का बफर हमारा नहीं ब्रेक हुआ. वी नीड एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स इन निफ्टी. यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, वी विल नॉट टेक अ ट्रेड. ओके, एंड सेम गोज फॉर दिस केस. यहाँ पे बाय ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है ऑन द हाई, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड. और अगर इसमें इसी कैंडल पे अगर बाय ट्रेड ट्रिगर हो जाता, वी वुड हैव इमीडिएटली एंटर. नाउ फॉर सेल ट्रेड, दिस इज द सेल सिग्नल. वी कैन नॉर्मली टेक दैट सेल एंट्री हियर एंड द मार्केट गोज डाउन टू क्वार्टर्स. सो आपने देखा कि कहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी है. यहाँ पे इसका बफर नहीं ट्रिगर हुआ, अपसाइड पे भी इसका बफर नहीं ट्रिगर हुआ. बफर ट्रिगर होता तो अब इस पॉइंट को उससे नीचे होना पड़ता. मीन्स द इफ द बफर वुड हैव ट्रिगर्ड, MFI ऑलरेडी बिलो 50 है, सो वी वुड हैव टेकन द सेल एंट्री. दिस इज द पॉइंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल पे द MFI इज एट 46.29. ऑन द नेक्स्ट कैंडल ट्रिगर्स, वी टेक एन एंट्री एंड थोड़ा बहुत हमें अप मूव मिलता है. दिस वॉज द एक्सपायरी ट्रेड, दैट इज 28th of April. यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अपसाइड पे ट्रिगर होता है एंड व्हाट अ गुड मूव. Trade for sell trade trigger here, and then we exited this particular point, and then the market keeps on going on the buy side. This was for the previous day trades. So adding the MFI and changing its settings to the level of 50 will help cross our fall signals. And if you are professional traders, अगर आपको trading में थोड़ा experience है, you can definitely add the VWAP. Okay, the VWAP is like this for the day. If you want to add it, just add 9:15, else it will take one more indicator. अगर आपको VWAP ऐड करना है, जैसे यहाँ पे जाइए और यहाँ पे anchored VWAP होगा, उसको पहली 9:15 की कैंडल पे ऐड कर दिए और वही आपका दिन का VWAP होगा. So just take the buy entries above VWAP and sell entries below VWAP. That is a simple concept that you need to follow. If you are professional traders, for others, they can just follow the BOSS scalper as it is. So this was the BOSS scalper analysis and redefining the BOSS scalper with using the MFI. अब हम देखेंगे एक ओवर एनालिसिस Nifty50 और बैंक निफ्टी का. So this is the Nifty50 chart. Let's go for the candlestick pattern. Okay. So firstly, एक layman को, let's say आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या support बनता है. Okay. So firstly, everyone will draw like this. Just a moment. This. Once here, once here. This is the first resistance level. As you can see, once, twice, here also, here also, here also. So this is the first resistance level. Now support comes at somewhere at around this. Okay. So this is the first level support. Now, this is the first level of support and resistance. Now the point is we have to search for what lies beyond that. Okay, the search is not limited to just the first level. What if the market breaks it? What the next level जो हम देखेंगे वो क्या होंगे. हमें फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बियॉन्ड देखना है. अगर मार्केट इन्हें ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें क्या इसमें देखना पड़ेगा, आगे के लेवल्स क्या होंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक लेवल मिला जहाँ पे मार्केट ने अराउंड सस्टेन किया, एट अराउंड दिस पॉइंट. दिस वॉज द मार्केट फर्स्ट सपोर्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे देन एक्ट इज रेजिस्टेंस अगेन एंड रेजिस्टेंस अगेन एंड सपोर्ट अगेन एंड रेजिस्टेंस अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है, दैट इज अराउंड 650 एंड 600 आफ्टर 438 ब्रेक्स. और हम लोअर लेवल पे क्या देखते हैं, लोअर लेवल पे वी आर गोइंग टू फाइंड अ सपोर्ट समवेयर एट अराउंड हियर. दिस इज द पॉइंट. Sharp reversal from market at this particular point also, and market came down, couldn't sustain above this, gap down, couldn't sustain below us, again gap up, went more lower down, and then again took a gap up. So this is the lower levels for the Nifty. So this is the levels that you can keep in range, or you can keep a good range in this. Nifty can trade below this into this range for around next 1.5 weeks, around 17,600 till the level of 16,400. So that is approximately around 1,300 points range for the Nifty50. So this support level आप देख के ट्रेड कर सकते हैं, and always be ready for the traps. ट्रैप्स क्या होगा कि आपको रेजिस्टेंस तक ले जाके आपको ऐसा सेंस कराया जाएगा कि ये ब्रेकआउट है. वंस यू हैव टू कंफर्म कि ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे हमें ट्रैप किया जा रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं बनेगा जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होंगे. सो ऑलवेज वॉच आउट फॉर ट्रैप्स. रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है. यहाँ पे अगर एक कैंडल भी ऐसे ऊपर देते हैं जैसे इन्होंने यहाँ दिया, दिस इज द मूव. Okay, so यहाँ पे ट्रैप किया गया. यहाँ पे it was I guess 21st of April. It was expiry day also, I think. Okay, the market moved from here to here. और यहाँ पे closing there है resistance के around. It was a bullish closing. Market was very gap up move, and the next day, it's all gone. Okay, so be prepared for the traps. This is a bottom tweezers. Okay, ये तब बनते हैं जहाँ पे reversal की उम्मीद होती है, and the market reverses again. Okay, so this is the also reversal kind of pattern where I will explain the next few videos. So ये था
हमारा निफ्टी का एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक 1.5 weeks. I think this range will remain valid. If this range breaks somehow, I will update for the video in the later on. So I think everyone has known how to apply the BOSS scalper. I guess सब लोग समझ गए होंगे कि हमें BOSS scalper कैसे अप्लाई करना है. ये निफ्टी 50 का एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझा दिया, जिसमें एक बिगर रेंज हम निफ्टी 50 के लेके चलते हैं और हम कैसे सपोर्ट और रिवर्सल्स पकड़ते हैं ताकि हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल जाए. सो दिस इज ऑल फॉर you from my side from today. Thank you everyone, have a nice day, and I will upload more videos in near future to get this kind of reversal, to get this kind of traps, because if you have taken the traps, let's say अगर आप यहाँ फंस गए, so the fall is so sharp that you will not get time to exit. अगर आप यहाँ पे एक बार आपकी पोजीशन कॉल साइड में फंस गई तो ऑप्शन ऑफ 70 becomes 20 in about 10 to 15 minutes, and you don't want that. और वहीं पे put around the level of 70 becomes 150 and also 180. So we will have to catch these moves, and I will try to explain more in this video how to catch the traps in the next series. Okay, so this was the overall analysis and redefining the BOSS scalper. Make sure you apply, everyone will apply the money flow index from here. I will tell again, मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ से आप अप्लाई करिए. यहाँ पे इसकी 50 सेटिंग्स में आपके इसको कलर बढ़ा के अराउंड वाइट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे easily दिखेगा. So this was the MFI settings to use in BOSS scalper, and just apply the BOSS scalper as given in the code. Thank you everyone, have a nice day. I will upload more videos in near future bringing you some more intraday analysis on how to find the traps and how to make very big money in a few trades. Thank you everyone and have a nice day.